Hi, welcome back. Again, this is second video for my history project series. We are dealing with ancient Egypt. We have read the story of the world already in the first part. We have drawn the maps telling them visually to my kids that where is Mesopotamia and where is Egypt literally on the map, and where is River Nile, and what is the concept of Upper and Lower Egypt. What is with this book we learn what is estuary, what is delta, what is mouth of the river, and why the mouth is not fertile but the delta is fertile, all those things. So these things which we covered in the first part of the Egypt video, and this part also I told that the first farm machine which we made was this khaduf for irrigation, because when the civilization started they had to irrigate their farms using Nile river. So that is how we are. Now I am moving to the next major books which we used, and I'll tell you the projects with them. So pehli baat, I would not recommend this book, but I'm just telling you this is a story. If your kids love Jeremy Stilton, my girl love it. I don't like it much, but we have 2-3 books. The point was that when you talk about these subjects, these topics, right, they're like the terminology, the words, they're like very foreign language kind of words which kids do not listen much. So but when I was reading, my elder one was like, "Yeah, I know this. Yeah, I know this." I was like, "How do you know all this?" And she said, "Mama, you don't need Jeremy Stilton, right? It talks about everything." And it really made me worried and curious that it is a comic, okay? I was like, I don't know what facts are giving in this, and you know, they make much more impact to a child's brain rather than what I'm blabbering. So that's why I asked her for the book, and she gave me this book to read. And this thing I can say that the facts are very right. They talk about Sphinx, they talk about the Pyramid of Giza, they talk about the capital city of Egypt, they talk about scribes. Just the terminology is correct. And because it's story based, so when I was telling a story, it was not a foreign term I was teaching her or telling her. She was like, "Yeah, I know it," and that kept her engaged in the ancient Egypt story for like 2 months. It was a 2 months we are doing it. I was fed up, but because she could relate everything to it. "Yeah, mama, I know it's like you, mama, this happened." Just in between she'll tell me some part of this book. So if your kids read comics and they do not like other kind of books, so this is a good thing if you want to introduce Egypt. But yeah, this is what she said. "I have read about it beforehand, mama, you don't know." Okay, so that's one thing. Again, going to my younger one, who cannot handle too much technical stuff, so I had 2 books which were very good read alouds for her, very simple. And because when I read, I have a technical book which I was reading to her, which she lost connections in between, right? She can't sit for so long, focus for so long. So now these books, one is this ancient Egypt book, and one is this one, I Wonder Why Pyramids Were Built. So these are completely picture based books, very very basic. If you have read the story of the world, there's no much pictures, but each part which is written in that story of the world, there are bits and pieces here. So when I was reading the story, when I read the story of the world to her, after that when I showed her, she was like, "Yeah, yeah, I know it. Yeah, yeah, I know it." So that way, these books really helped my younger one to connect to the story of the world. That makes sense. It's a very basic book in a way. So if you have like older kids, it won't make much sense, but I'll just show you for that sake कि जैसे ये अब मैंने जो ये मैप बनाया था, वो मेरी 6 year old को नहीं समझ आएगा. आई मीन लाइक इट्स टू मच ओवरवेलमिंग, पर इसने बहुत क्लियरली बताया है कि रिवर कैसे जाती है, ये माउथ होता है, यहाँ पे पिरामिड्स हैं और ऐसे. सो इट वाज लाइक विजुअली नॉट वेरी ओवरवेलमिंग फॉर हर. और अगेन बिकॉज आई नो बहुत बेसिक लिखा है, सो आई कुड टेल हर द स्टोरीज की व्हाई, व्हाट वाज एंशिएंट इजिप्ट, हु वर दे, लाइक सी pictures are really mesmerizing. उसने पढ़ना नहीं होता है, but like she'll keep looking, how mama, how pretty queen was there, right? Oh yeah, the Egyptian ladies used to wear kajals. So like mama, she's wearing the kajal and all that. So that way it kept her engaged in my story. And then the mummification process, or what is sarcophagus, and then very very basic that they were pharaohs, who were the gods, that was the government system, very basic. But yeah, the drawings are authentic. They were like जो actual drawings हैं Egypt की. So it's not like a kids book or an animation book. That way it's a good quality book. So she can not overwhelm, but she could at least, if you tell her Egypt, she can recollect these figures. So that was this book.
And this one is this series it's like a little funny part also. I'll tell you, like jab wo embalming karte the, when they make the mummy, they'll take the brain out from the nose and they'll take out all of the body organs, put them in the canopic chambers. So all those things are told very very clearly, you see. So it's like this book my younger mother will fiddle with, because she would have heard the stories like that, how they wrap the bandage. Pictures are really engaging, which are not there in the Story of the World. So you can tell them the story, and then she can look through the pictures actually, and connect to it कि क्या हो रहा था. जैसे मैंने खाडूफ बनाया था, right? So they also have the खाडूफ. So that way the pictures in this book is really really very very nice. कि घर कैसे होते थे. So they usually हाँ मम्मा उनके घर flat होते थे, because there was no rain in those, so they did not need to make the conical houses. Everything was flat, and then they were very like, they have grapes and they'll crush with the feet and juice will come out. So that way this book is very very engaging for the younger ones. Like, look at how they used to dress up, they used to wear wigs. So for my younger one, this was the best book for fiddle around, to understand, to me show pictures like this. So this was a very good book in my opinion, which I'll hold on for long for my younger one. So elder one anyways has read through it, very easy language, so it was not like nothing new for her. But this was the book. Now I'm going to the main book, which we used as like the craft book, the learning book for me. And but it is a picture book, so but it is really really overwhelming for kids that way. So you really have to read through it. You cannot do read aloud of it, like full read aloud. My kids lost it in between. Like this, I simply did read aloud for one day for my younger one. This I did not do read aloud. Only the topics which I found that they need to know more about it, that I did. So जैसे आपने उसमें पढ़ा कि like their upper lower Egypt, they fought, the kingdoms fought, and then one. So I'll tell you the craft, because each craft is driven from this book only. Like this one, if you see crowns. So there was a white king, there was a red king. They fought, and then the crown became one. Okay, so that was and this crown actually became the crown of Pharaoh, because before they were individual kings. When one king became the ruler of whole Egypt, then it became the Pharaoh. So then we made this crown. So I did not know how to put the white one inside, so I just attached white part at the back, and they had cobra snake as like a protector or something like that. And then this is the crown. That was the first craft, if you see. It's not my size, but yeah. So this was the first craft that they made from this one कि हाँ pharaohs ऐसे होते थे. फिर जो pharaohs होते थे, दोनों king and queen equally dress up होते थे. दोनों को they're like very good at dressing up. So इनके necklaces, you see how grand their necklaces are. And only the pharaohs could wear it like this, if you see. And both will wear it. So then we made the necklace. So कुछ नहीं किया मैंने, पेपर प्लेट होती है ना, उसका सर्कल काट दिया और उनको कुछ पीसेस ऑफ स्ट्रॉ, कुछ पीसेस ऑफ फोम दे दिए, और बस देन दे उसमें तो इसमें यंगर वन उसने ऐसे करके ये हमारा जो ये फेरोआ का नेकलेस है, इफ़ यू सी द फ्रंट ऑल्सो इट्स मोर क्लियर, ये जो हमारा फेरोआ का नेकलेस था राइट, वो हमने ऐसे बनाया. सो दिस इज द फेरोआस नेकलेस विच दे मेड फ्रॉम दिस बुक एज अ क्राफ्ट. ठीक है. फिर हमारी जो तीसरा क्राफ्ट था, तो वहाँ पे हमेशा मेल फेरोआस होते थे, लेकिन दे हैड फिट, I think I pronounced correctly. She was one of the only female pharaoh before Cleopatra. Cleopatra was Greek. I'm talking about Egyptian. So she had to wear the beard just to pretend that he is a man, because I mean, like, there's a story that how did she become the queen and how much struggle she faced. But then we had to make the beard because that was a custom. So हमने क्या किया, रिबन लिया और वो जो टी शर्ट यहाँ नहीं होता, आप सिंपल बुल भी ले लो, उसको लगे हमने सारी ग्लूगन से चिपका दिया, और जब उसने ऐसे को पहना, you see, so first I look my funny, but I know my girls loved it. So like this one we made the उसकी जो होती थी जो उसकी so that's what we made this one. So this was one basic thing. और उसके अलावा इसमें एक बहुत important part थी, वो सेकेंड उसमें गए तो हम सोशल ऑर्डर के बारे में आते हैं. अगेन आई डिड नॉट फुल रीड अलाउड, लेकिन आई टोल्ड देम दे वर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, दे न्यू हाउ टू ग्रो फ्रूट्स, दे न्यू हाउ टू ग्रो ग्रेन्स, दे यूज टू बार्टर थिंग्स कि अगर मैंने ये उगाया तुम ये उगा दो. दे यूज टू ट्रेडिंग सिस्टम, दे डिड नॉट हैव मनी बट दे यूज टू ट्रेडिंग. सो आई जस्ट वर्बली टोल्ड देम. देन one of the main topics was the God, because God played a very very important role in the life of Egyptians. तो अब God का क्या था कि
वो एनिमल्स को, जैसे कैट को वर्शिप करते थे। और एक बीटल स्क्रैप करके उनका, जैसे इसमें मैं दिखाऊंगी मोर क्लियरली, ये जो मेरे पास सफारी ट्यूब्स हैं, इसमें ये वाला स्कैरब बोलते थे इसे, ये बीटल होती थी। और इसके आगे जो ये वो अपनी जब डंग को कैरी करती है तो वो अपने ऐसे उठा के कैरी करती है, यू नो। सो उसको एक एमुलेट बना के, बेसिकली अब ब्रेसलेट बना के पहनते थे, और इट वॉज बिलीव दैट इट विल प्रोटेक्ट यू। तो हमने भी वही बनाया। तो ये ब्रेसलेट है, इट्स माई किड साइज, सो इट विल गो लाइक दिस एंड दे विल वियर इट ओवर देयर आर्म। तो ये बीटल बनाई थी हमने पेड़ों की, जब क्रश हो गई है, बट अराउंड हमने इसको सजाया था। और यहाँ पे रेड कलर का, इफ यू कैन सी, यहाँ पे प्रिटेंडिंग दैट यू नो दिस बीटल इज सर्विंग द सन एंड दैट विल बी लाइक एमुलेट which the pharaohs will wear. So like if you see this one in this picture, it's much more clearly visible. You see that? So we made this amulet कि you know pharaoh की ड्रेस में क्या होगा, क्राउन हो गया, नेकलेस हो गया, ये बियर्ड हो गया, because we are female pharaohs and we are wearing this scarab, this bracelet, because again we will be protected by it, and that all covers the god part of it. Okay, then there was one this major thing that because gods के जो टेम्पल्स होते थे, दैट इज वेरी स्पेसिफिक, कि जो नॉर्मल लोग थे वो टेम्पल में नहीं जा सकते थे. दे यूज टू टेम्पल्स वर ओनली फॉर प्रीस्ट एंड फॉर किंग्स, द फेरोआस, एंड you know they really used to treat the gods like human beings. They used to serve food to them 3 times a day, and they will dance in front of the statues, and girls will get married to the god statues, and they'll be locked in. So it was like the whole story about how important the gods were. So this is one musical instrument which the women used to play, who used to dance for serving the god. So we made this musical instrument. कुछ नहीं, कार्डबोर्ड है, उसके बीच में सर्कुलर शेप का मतलब काट लिया, और ये कलरफुल पेपर था, और बीच में यू नो वूल से धागे से छन 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 छन, so रैटल नहीं होता बच्चों का, so like that. So we try to make this instrument which is shown and with ribbons and everything, कि you know that's how they used to worship gods or like take care of the gods. फिर आया सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा मेन था, कि ममीफिकेशन प्रोसेस. ये सेक्रोफेगस होता है, और कैसे मम्मी बनाते थे, ब्रेन को निकाल देते थे, जो बाकी ऑर्गन्स होते थे उसे वो कैनोपिक जार्स में डालते थे, और वो उसके लिए हमने पूरा. और पिरामिड्स एक्चुअली ओनली दे मेड फॉर 500 years, बट देन बिकॉज द रॉबर्स वर देयर, यूज्ड टू स्टील एवरीथिंग फ्रॉम द पिरामिड्स, दो दे स्टार्टेड मेकिंग टूम्स व्हिच वर लाइक caves in the rocks. So then we have made a full it is a tomb. तो अगर आपको I don't know how much you can see, so I'll show you with the canopic jars. So again I'm telling the whatever we saw in the book, we tried to create in our best capacity. So like if you see इसी ममीफिकेशन, इसमें ऑर्गन्स डाल के कैनोपिक जार्स होते थे, कैन यू सी. इसकी लास्ट में उन्होंने बहुत क्लियरली बताया, और फिर along with the mummy they will put the canopic. So these are the canopic jars, if you can see. You know, these are the canopic jars. There'll be 4. So I had 2 bottles. So I'll show you how we made the canopic jars. तो ये मेरे पास प्लास्टिक टाइप का कुछ मटेरियल था. इसको मैंने थोड़ा, क्योंकि ब्लू कलर का देखा आपने, इट इज ऑल यू नो ब्लू कलर, मैंने इसको किया. इसके अंदर हमारे सफाई ट्यूब से ह्यूमन ऑर्गन्स, हार्ट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर देम, ये डाला. और जो नॉट प्लेडो, एयर डाई क्ले होती है ना, फॉर दैट वी डिड द माउथ, ओके, ऑफ लाइक देयर 4 एनिमल्स होते थे बिकॉज दे वी वर्शिप, और उसको हमने पेंट किया और मार्कर से मार्क कर दिया, और ये हमारा जो है हमारा एक कैनोपिक जार बन गया. सो आई डू थिंक इट लुक्स लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. तो हमने इस तरह के 2 कैनोपिक जार्स बनाए हैं. एक like this I have, so this is a box, it's a tomb, so it is all stuck there with the glue and everything. So I'll just try to tilt you and show you. So you see they are the canopic jars, and sorry, okay, so these are मैंने canopic jars. फिर हमारे यहाँ पे जो मम्मी होती थी इसकी, how will be the mummy. तो my girl, this is a sarcophagus. Sarcophagus is something which is designed entirely by me because it is complicated. तो ये जैसे कार्डबोर्ड का बनाया, मैंने गत्ते का बनाया, और बाहर उसको ड्रॉ किया जो उसका होना चाहिए, और उसको कलर किया. इसके अंदर की मम्मी जो थी, इफ़ यू कैन सी, दैट मम्मी वॉज अगेन मेड ऑफ एयर डाई क्ले बाय माई एल्डर वन. और यहाँ पे साथ में यू नो बाउल्स में हमने ज्वेलरी रखी है, कलरफुल फूड रखा है उनके लिए, और वो अपने साथ ना स्टैचूज ऑफ सर्वेंट्स लेके जाते थे, क्योंकि आफ्टर लाइफ में उन्हें काम ना करना पड़े. So, you know, I mean these kind of stories you have with Egypt, like it's really funny. But हाँ, तो वो हमने जो मेरे पास प्लास्टिक के कुछ you know टॉयज टाइप से, वो देखो 4 जो लोग खड़े हैं यहाँ पे,
So those are there, all this thing. And then around it, फिर जो जैसे आपने देखा कि पिरामिड्स बहुत सुंदर में बहुत सारी कार्विंग पेंटिंग की जाती थी, और बहुत सारा मंत्र नहीं कहूँगी, बट उनकी जो होती ना रिलीजियस रीडिंग्स और रिलीजियस पिक्चर्स, गॉड के पिक्चर्स, वो सब ड्रॉ की जाती थी, और बहुत गोल्डन कलर से. तो हमने दैट इज़ व्हाट माय गर्ल्स डिड, कि जो हमारे अगर आप इसको देखोगे, ये तो ऊपर का शू बॉक्स इग्नोर कर दो, जो नीचे की 4 वॉल्स हैं उस पर ड्राइंग्स हैं. So my girl has drawn scarab beetle. There's these dancers, which was like gods dancers, whatever you can see. तो वो हमने जो पूरा टूम बनाया है, शोइंग कि किस तरह से एक्चुअली होता होगा. You see, स्कैरब बीटल बनाई है, वो हमारी स्कैरब बीटल है, विच इज माई डन माई यंगर वन. और अगर इधर को हम उसने गॉड्स बनाए, व्हाटएवर द बेस्ट कैपेसिटी शी कुड ड्रॉ. सो ये हमारे इसके गॉड्स बने हैं, और ये सब यू कैन मूव. सो अगेन इट्स नॉट हार्ड फिक्स, बट हाँ, जैसे फूड चेन्स, दीज कैन कम आउट एंड माई गर्ल्स विल वेयर इट लाइक दिस. सो अगेन ट्राइंग टू मेक अ प्रोजेक्ट एज मच इंटरेस्टिंग एंड मच फिडलिंग काइंड ऑफ थिंग फॉर देम. तो ये हमारा बना सेक्रोफेगस, ये बना हमारी मम्मी. कोई बहुत खूबसूरत टाइप चीज़ नहीं है, बट हाँ, ऑल थिंग्स आर लाइक दे वर एक्साइटेड. अच्छा मम्मी बनाएंगे, अच्छा हम सेक्रोफेगस. सो या दैट्स व्हाट वी डिड. तो ये हो गया ये इस चैप्टर का. सो फॉर ममीफिकेशन हो गया. फिर आ जाओ पिरामिड्स पे. ठीक है, सो पिरामिड्स पे हमने अगेन दिस वाज अगेन वेरी प्रोजेक्ट विच इज डन वेरी वेरी इजीली. सो दिस इज द पिरामिड. तो माई यंगर वन, सो उसने ज़्यादा मेजर कुछ नहीं किया. उसने कार्डबोर्ड के 4 ट्राइंगल्स काटे. आई जस्ट टोल्ड हर दैट बेस हैज़ टू बी स्क्वायर एंड द 4 ट्राइंगल्स हैव टू बी सेम. तो उसने थोड़ा बहुत किया, बिकॉज अगेन इट वॉज नॉट सिमेट्रिकल. सो मैंने ये जो होता ना पेपर मैश नहीं होता, ग्लू के साथ न्यूज़पेपर को मिक्स करो एंड देन यू कुड मेक इट अ स्मूदर टेक्सचर, एंड देन वी कलर्ड इट ब्राउन. अगेन आई एम टेलिंग यू दिस बुक वाज सोर्स फॉर ईच ऑफ माई क्राफ्ट. के जैसे ऊपर देखा, जैसे कि यूजुअली गोल्ड का होता था, ऊपर कोटिंग होती थी, जैसे हमारे हिंदू टेम्पल्स में होता ना, जो गुंबद होता है वैसे करके ऐसे होता था. दिस इज अ पिरामिड. और मैं थोड़ी मार्कर से लाइन्स ड्रॉ करी जस्ट टू शो द लाइन्स ऑन द पिरामिड्स की ब्रिक टाइप की होती थी. ठीक है, तो हमने पिरामिड बनाया. फिर हमने बाकी क्या बनाया, बाकी से बहुत कुछ है. अभी जस्ट टोल्ड देम कि हाँ वो गेम्स खेलते थे, वो फैमिली के लोग होते थे, ऐसे सजते थे, काजल लगाते. तो हमने वो सब तो कुछ नहीं किया, बट हमने ये चीज़ करी जो पेपिरस वाला था, लाइक दिस वन, कि हम पेपिरस से कैसे लिखते थे. तो ये पेपिरस आई कुड नॉट, उन्होंने पेपर वीविंग कर लो, बट इट वॉज नॉट दैट ऑथेंटिक फील. तो मुझे वो मन नहीं किया कि पेपर वीविंग हम वैसे ही क्राफ्ट में बहुत करते हैं. सो आई डिड नॉट wanted to make a paper kind of thing. बट हाँ, हाइलोग्राफिक्स was something which was a lot of interest for my elder one. तो उसने ये किया, एक येलो कलर का पेपर लिया, उसने उसको चॉक वॉक से करके बहुत गंदी रस्टिक लुक दी, और उसने कुछ अपने आप ही सिंबल देखा, आई डोंट नो सिंबल्स देखिए उसने. इट्स नॉट रियली विजिबल, बट हाँ पेंसिल्स से उसने थोड़े बहुत सिंबल्स ड्रॉ किए, लुकिंग एट जिस बुक में हाइलोग्राफिक्स बताए गए हैं. सो इट वाज जस्ट हर ओन प्रोजेक्ट कि हाँ हाइलोग्राफिक्स होता था. और उसके बाद नथिंग, या ये सब किया. स्कैरब बीटल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स किए, और एंड में हमने यही देखा कि इसके एंड में ये भी बताता है कि उसके बाद ग्रीक्स आ गए, फिर उसके बाद रोमन्स आ गए. सो अगेन आई एम टेलिंग कि हिस्ट्री फॉर अस इज कि इट स्टार्ट, आई मीन लाइक व्हाई दिस ऑल डिस्कशन स्टार्टेड, क्योंकि कोविड में दे आर ऑलवेज अराउंड कि हाँ Pakistan, US, China fights, why countries fight, why this and that. So that is my approach to history, to tell them कि countries क्यों लड़ती हैं, कैसे लड़ती हैं, कैसे अटैक्स होते हैं, कैसे आर्मीज बनती हैं, क्यों ज़रूरत है आर्मी की. So this book, ये सब क्राफ्ट वाफ्ट होने के बाद भी I would like to tell you one thing. इसमें ना जैसे ये देखा आपने, they had only one this pony they have. So this is again very normal for us, क्योंकि हमारे तो हिंदू रिलीजन में ऐसा ही होता है, जो हमारे ब्राह्मण्स होते थे then all that. So this is also a story then कि ये क्यों लगाते हैं, और स्पेशली जब गुरुकुल में बच्चे जाते थे, why it was, I also did not know. So again you learn with along with kids. So they will, my girls ask this question कि इनके hair ऐसे क्यों हैं, and why they are making only choti, and this book tells you कि this was the rule, if you're going to be a scribe you need to cut your hair like this. So that I'm telling, this book I'm really loved with. तो I was telling इसके बाद फीस्ट फेस्टिवल, ट्रेड एंड ट्रिब्यूट कि कैसे कंट्रीज आपस में बिजनेस करना शुरू किया,
और इस बुक में आगे है कि कैसे वॉर्स शुरू हुई, जब नुबियंस ने अटैक किया, फिर आई थिंक पर्शियंस ने अटैक किया इजिप्ट के ऊपर, उसके बाद अलेक्जेंड्रा ने उसको हेल्प की, फिर क्लियोपेट्रा बनी, उसके बाद ऑगस्टस आया. ऑल दो स्टोरीज, नॉट मच बट या वी कुड टच ऑल दिस टॉपिक. सो that way I'm telling you, this book is like, it has everything. May not be for very young kids, but कोई पेरेंट जो मेरी तरह ना जिसे कुछ नहीं आता है अभी, उसके लिए ये बेस्ट बुक है, along with Story of the World, to actually start learning from zero about the history of the world. And it's nothing, it's fun. I really enjoyed this Egypt project. Kids also had fun, and now we are ready to jump to the next part of Story of the World, Sumerians, which I have no clue about. But yes, we will learn along with, we'll collect the resources and we'll make the projects. I'll come here to tell you. So that's all I wanted to share today. Hope you enjoyed this. Thank you for watching. Bye bye.